Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम रिसेंटली जो पीटीआई के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे. हम बात करेंगे अबाउट द फॉल ऑफ इमरान खान एंड द पीटीआई एंड पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ इमरान खान एंड द पीटीआई इटसेल्फ. नाज़रीन, बिफोर वी गो ऑन टू डिस्कस दिस थिंग, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये हम फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं, इमरान खान साहब की और पीटीआई की बात क्यों कर रहे हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, सिंस देन इमरान खान हैज़ बीन बिल्डिंग अ नैरेटिव अगेंस्ट द देन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड लीडरशिप लेड बाय जनरल कमर बाजवा साहब. और इट वाज ब्लेम्ड, इट वाज एक्यूज्ड दैट जो उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दे हैव एक्चुअली लेट द अमेरिकन कंस्पायर अगेंस्ट पाकिस्तान. And later on he changed the narrative and said that military establishment was directly engaged in helping regime change in Pakistan. और उसी वजह से उन्होंने अपने सपोर्टर्स के अंदर जो है वो एक सेंस क्रिएट किया दैट इट वाज द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दैट एक्चुअली लेड टू द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड लेड टू द राइज ऑफ द पीडीएम, व्हाट ही कॉल्स एज द थीव्स एंड डेकॉइट्स. Now, after the change of military leadership, obviously the new leadership came, and Imran Khan hoped that this new military leadership would put pressure on the PDM and ultimately force them to go for elections in this year, early election this year. लेकिन हमने देखा कि military establishment had publicly excused itself from indulging in any political activity at all. और हमने देखा कि जो military leadership है वो largely indifferent रही to this political crisis that was unfolding between the PTI led by Imran Khan and the PDM. इस मामले में देखा कोर्ट्स की प्रोसीडिंग भी हुई, लेकिन हमने मिलिट्री की तरफ से कोई मेजर जो है वो उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं देखी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से. लेकिन फिर हमने देखा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जब पीडीएम की और इमरान खान साहब की टॉक्स फेल होती हैं इलेक्शन के वाले से ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जब वो टॉक्स फेल होती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो हमने एक रेट्रिक देखा पीटीआई की तरफ से भी, एक अप होता हुआ रेट्रिक देखा. और अल्टीमेटली 9 मई से 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने रीट्रेट किया एलिगेशंस कि उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो कुछ सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो इन्वॉल्व हैं. इस एक्विजिशन को लेके हमने डीजीआईएसपीआर की तरफ से 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, एक प्रेस रिलीज़ देखी. और उसके बाद हमने देखा कि 9 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद में रेंजेस की तरफ से, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं. और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की तरफ से तो डायरेक्टली नहीं कहा गया, लेकिन इट वाज क्लियर फ्रॉम हिज प्रीवियस 1 years ऑफ नैरेटिव that he would ultimately blame the military establishment for not just the ouster of his government but also the military establishment behind his arrest as well. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि उनके जो वर्कर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, ऑर्डनरी वर्कर्स हैं या उनकी जो लोअर लेवल के जो ऑफिस बीयरर्स हैं, they automatically assumed that they have to march toward the military installations. और हमने देखा कि एक कार्नेज किया गया, एक अटैक किए गए मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों के ऊपर किए गए, मिलिट्री सिंबल्स के ऊपर जो हैं वो अटैक किए गए, जिनको मिलिट्री सिंबल्स तो कहा जाए या नेशनल सिंबल भी कहा जा सकता है. इस 9 मई के जो वाक़यात हुए, जिसके बारे में पहले दिन तो एवरीबडी वाज इन शॉक बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड, और मीडिया में जो जुमले यूज़ किए गए दैट द रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस्ड एवरीवेयर. इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, दैट वाज पीटीआईज रेड लाइन. एंड कोर कमांडर के हाउस पे हमला हुआ, जना हाउस पे हमला हुआ लाहौर में. मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और सिंबल्स को हिट किया गया बाय द पीटीआई एंगर्ड मॉब. और उसके हवाले से कहा जाता है दैट दीज आर द सीन्स दैट हैव नेवर बीन सीन इन पाकिस्तान हिस्ट्री. ऑब्वियसली नाजरीन, जब एमोशंस होते हैं तो इस तरह के इवेंट्स तो होते हैं, लेकिन जो ही एमोशन सबसाइड होते हैं तो रियलिटी बाइट्स, एंड दिस रियलिटी इज़ बाइटिंग पीटीआई वेरी वेरी हार्ड. एंड द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट आफ्टर दिस इंसिडेंट हमने देखा कि पीटीआई के लीडर्स को अरेस्ट किया गया. लिटरली थाउजेंड्स ऑफ देम आर अरेस्टेड. टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट सारी की सारी सिवाय इमरान खान साहब के वो जेलों में है, या तो वो इन्हीं वाक़यात के ऊपर उनके ऊपर केसेस बने हैं, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या एमपीओ के तहत जो है वो हाउस अरेस्ट हैं या अरेस्टेड हैं, डिटेन्ड हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 30 days के लिए. इसी अरेस्ट के दौरान हमने देखा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अगेन इल्ज़ाम लगाया गया दे आर बिहाइंड दिस अरेस्ट, मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से. लेकिन हमने देखा कि उसी अरेस्ट के दौरान बहुत सारे पीटीआई लीडर्स जो हैं वन बाय वन दे स्टार्टेड लीविंग पीटीआई. और बड़े टॉप के नाम थे फवाद चौधरी साहब, शरी मज़ारी साहिबा, इस तरीके से चीमा साहब हैं, मसर चीमा एंड जमशेद चीमा, फिर मलाइका बुखारी हैं. इस तरीके से बहुत सारे जो टॉप लीडर्स हैं दे हैव ग्रेजुअली अबैंडन्ड जो है पीटीआई की शिप को.
or it is believed that they did so under the coercion, under the threats, or in some ways for some leaders it was a genuinely change of heart, because ہم دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہٹتے ہی they started blaming PTI chief for that. جو چوہان صاحب ہیں یہاں پہ، فیاض چوہان صاحب پنجاب میں، he is just one of the examples. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو ان بنڈلنگ ہو رہی ہے، اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان ریول ہو رہی ہے، اٹ ہیز بین ڈس انٹیگریٹڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھیں کہ اٹ ریئلی ہیڈ ڈسٹربڈ ناٹ جسٹ دی پی ٹی آئی سپورٹرز ایٹ دا گراس روٹ لیول بٹ آلسو عمران خان ہمسیلف، جن کی لاسٹ اسپیچز اگر دیکھیں جس طریقے سے وہ اپیل کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، جس طریقے سے وہ اپیل کر رہے تھے گورنمنٹ سے اینڈ پاور سے دیٹ دے شوڈ کم اینڈ نیگوشیٹ ود ہم، وچ شو دیٹ ہی از آن دا لوزنگ سائڈ اور ہی از آن دا ویکر سائڈ. اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ، اور اسی واقعات میں ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین بڑی امپورٹنٹ، اور وہ تھی کہ دیر از اے ٹاک اینڈ دیر از اے سیریس ٹاک ایٹ دا ٹاپ لیول، جس کے اندر ایک پی ڈی ایم کے اندر آلموسٹ کنسنسس ہے دیٹ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی شوڈ بی بینڈ. اور دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، بٹ اٹ از ہائیلی لائکلی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم دیٹ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ول بی بینڈ اور دیر بی سم ریسٹرکشنز آن دا پی ٹی آئی اٹ سیلف. اس کانٹیکس میں ناظرین دیکھا جائے تو ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ فیوچر آف پی ٹی آئی کیا ہے، فیوچر آف عمران خان کیا ہے اپ کمنگ الیکشنز میں بھی اور ایز اے پارٹی ان فیوچر. تو اسی پہ ہم بات کریں گے ناظرین. اور ہم دیکھیں اگر ہسٹری میں پاکستان کی ہم پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو کیا پی ٹی آئی جو ہے اٹ از دا اونلی پارٹی وچ از لاکنگ ہانڈس ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ آنسر از نو. ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے حوالے سے کانفلکٹ بنے. ہم نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ دیکھی جس کو بین کیا گیا، بٹ پھر الٹیمیٹلی 71 کا کرائسس ہوا. مجیب الرحمان واز ویری پاپولر اوور دیئر، لیکن آبویسلی اس پاکستان کے حالات تھوڑے ڈفرینٹ تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو نیپ ہے نیشنل عوامی پارٹی، اس کا کانفلکٹ بنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور سکالی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بین کیا گیا فار انسائٹنگ وائلنس ان ایٹ دیٹ ٹائم NWFP اینڈ کرنٹلی KP، اور نیب کو بین کر دیا گیا. اب وہ نیب جو ہے وہ ANP کے نام سے، عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے کام کرے، لیکن وہ پروجیکٹ بھی فیل ہوا. الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ ANP ری ایمرجڈ ایز اے پارٹی. وہ پہلے بھی ایک KPK میں میجر رول پلے کرتی تھی، آج بھی ANP از اے میجر کنٹریبیوٹر ٹورڈز دی پولیٹیکل لینڈسکیپ آف KP. پھر ہم نے دیکھا 1970s میں جب سکالی بھٹو صاحب کو فرسٹ ریموو کیا گیا بائی مارشل لا اور پھر ان کو ہینگ کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دور میں. بھٹو صاحب واز ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈرز آفٹر شیخ مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان. اور بھٹو صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اٹ سیمڈ ایز ایف جب ان کو ہینگ کیا گیا دیٹ دیر بی اے پبلک ریئیکشن، لیکن ہم نے بہت سگنیفیکنٹ پبلک ریئیکشن تو نہیں دیکھا. لیکن ہم نے پیپل پارٹی کی طرف سے ہم دیکھا کہ سکالی بھٹو صاحب کے جو صاحبزادے تھے ہی اسٹارٹیڈ اینڈ الذوالفقار ایک تنظیم بنائی گئی اور اس کے حوالے سے الزام لگایا گیا دیٹ اٹ از انگیجڈ ان ملٹری ایکٹیویٹیز، ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور ہم نے دیکھا کہ پلین ہائی جیک ہوئے، بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہوئے، اور اس حوالے سے الذوالفقار کو بین کیا گیا، پیپلز پارٹی کو کرش کیا گیا. سو مچ سو دیٹ سکالی بھٹو صاحب کی ہینگنگ کے بعد، ان کی اسیسینیشن کے بعد، ہم نے دیکھا کہ PTI پارٹی کی جو سکسیسر تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ، شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو پاکستان انیشلی. اور 1980s میں دیٹ واز اے ٹائم جب پیپلز پارٹی کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے سگنیفیکنٹلی کرش کیا گیا. اور اسی دوران میں دیکھا دی رائز آف شریف بردرز اینڈ ہاؤس آف شریف جو ہے وہ ہمیں ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اینڈ اٹ از بلیوڈ دیٹ ہاؤس آف شریف واز ڈیولپڈ ایز اے سبسٹیوٹ لیڈرشپ فار دا بھٹوز. بٹ ہم نے دیکھا کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ودن 2 months جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ شی بیکمز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. سو دا پروجیکٹ ٹو ڈسٹرائے پیپلز پارٹی فیلز ان 1980s. اور the project to establish the House of Sharif in Pakistan politics, it was successful but it was not immediately successful. ہم نے دیکھا کہ 1990s میں اسی دو فورسز کے درمیان میں ہمیں ایک ٹسل فار پاور نظر آتی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے which is considered to be an anti establishment party، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ شریفs تھے who were considered to be pro establishment. لیکن ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی 1990s میں، لیٹ 1990s میں جو شریف فیملی ہے، جو شریف گورنمنٹ ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے نام سے تھی، اس کے درمیان میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں پھر کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے لیڈنگ ٹو دا مارشل لا آف 1999. لیکن اگین دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈر جنرل مشرف ٹرائز ٹو سپریس بوتھ پارٹیز، پاکستان پیپل پارٹی اینڈ PMLN، اور اسپیشلی جو مسلم لیگ تھی اس کو اس کی لیڈرشپ کو ہٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ شریف برادران کو ایگزائل پہ بھجوا دیا گیا، انیشلی امپریزن تھے پھر ایگزائل پہ بھجوا دیا گیا. ان کے لیڈرز کو پریشر ڈیولپ کیا گیا، ان کی پارٹی کے اندر سپلٹ کر کے PMLQ کریٹ کی گئی. پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو بینظیر بھٹو تھیں وہ سیلف ایگزائل میں تھیں، زرداری صاحب جیل میں تھے، اور کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی کو کرش کیا گیا. پاکستان پیپل پارٹی پیٹریاٹ ڈیولپ کیے گئے. اینڈ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ 2002 کے الیکشن میں PMLN hardly won 16 or 17 seats in the National Assembly.
आउट ऑफ 272 सीट्स. और उस कॉन्टेक्स्ट में हमें PMLN क्रश होती हुई नजर आई. इट लुक्ड एज इफ इट्स फ्यूचर इज ब्लीक. पीपल्स पार्टी वाज रिलेटिवली बेटर बट स्टिल इट वाज कंसिडर्ड टू बी वीक वन एंड डिवाइडेड वन. लेकिन हमने देखा कि 2008 में जब मुशर्रफ साहब के बाद पीपल्स पार्टी अगेन राइज करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ आसिफ जरदारी बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड, और पीपल्स पार्टी कम्स एज अ मेजर पावर, और स्पेशली सिंध के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं विद डिफरेंट लोकल पार्टीज़. PMLN comes again, rise again in 2008 election as the second largest party, और फिर बाद में हम देखते हैं कि 2013 के इलेक्शन में PMLN पावर में आती है. बट अगेन 2017 में PMLN और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का अगेन एक राइवलरी स्टार्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और उसके नतीजे में हमने अगेन देखा अनदर क्रैकडाउन, द सेकंड क्रैकडाउन ऑन PMLN, एक जनरल मुशर्रफ के ज़माने में और एक 2017 से ऑनवर्ड्स. और इस क्रैकडाउन के नतीजे में देखा कि PMLN जो है वो डिवाइड तो नहीं होती लेकिन इट इज़ सिग्निफिकेंटली वीकेंड. अगेन उसकी टॉप लीडरशिप को अरेस्ट किया जाता है डिफरेंट केसेस के ऊपर. कन्विक्शन बहुत कम है लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को अगेन जेल होती है, मरीम नवाज साहब को जेल होती है, शहबाज शरीफ साहब जेल में होते हैं. लेकिन नवाज शरीफ साहब को काइंड ऑफ सेल्फ एग्जाइल में है लंदन के अंदर पिछले 3-4 सालों में. और हमने देखा कि PMLN जो है वो नहीं करती, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ इनिशियली नहीं करती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पनिशमेंट का शिकार होती है. तो हैज़ PMLN बीन डिस्ट्रॉयड? नॉट मच एज सच. Politically, it is the second largest party in Pakistan, and politically, it is a major stakeholder in Pakistan politics. तो हम हिस्ट्री बताने का नाज़रीन मकसद ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी भी कोशिशें की गई किसी नेशनल लेवल की पार्टी को क्रश करने के लिए, वो कोशिशें मोस्टली फेल हुई, वो पार्टीज़ राइज हुई. MKM की एग्जांपल दी जाती है, बट MKM इज़ नॉट अ नेशनल लेवल पार्टी, इट इज़ अ पार्टी ऑफ द अर्बन सिंध. और अर्बन सिंध के अंदर ऑब्वियसली बात है इट हैज़ अ लिमिटेड टाइनी वोट बैंक, और लिमिटेड वोट बैंक है, ऑल्दो इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, आइडियोलॉजिकल है बट लिमिटेड है, लेकिन उसको क्रश किया गया. लेकिन MKM एज अ पार्टी डिवाइड जरूर हुई है, उसका वोट बैंक शायद ख़त्म नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं पे नाज़रीन आज तक जितनी भी कोशिशें की गई, फोर्स्ड कोशिशें की गई, फोर्स यूज़ की गई, प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए गए टू क्रश पोलिटिकल पार्टीज़, नन ऑफ देम वर्क इन पाकिस्तान. हाँ, वी हैव सीन दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए से बहुत सी पार्टीज़ एलिमिनेट हुई. मुस्लिम लीग फंक्शनल हमें ख़त्म होती हुई नज़र आती है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म हमें वैनिश होती हुई नज़र आती है. इस तरीके से बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कि मतलब एवोल्यूशनरी प्रोसेस से डिस्कार्ड की गई, पब्लिक सपोर्ट से या पब्लिक अपोजिशन से डिस्कार्ड की गई, बट इंजीनियरिंग के ज़रिए से, पोलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए से ऐसी पार्टीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं की गई. सूनर और लेटर दे अल्टीमेटली राइज टू पावर अगेन. सो व्हाट इज़ द लेसन नाज़रीन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ PTI? At this point of time, most of the PTI workers are disillusioned, they are disappointed. A lot of Pakistani supporters of democracy are disappointed by the fact that a political party is being pressured to, and their leaders are being pressured to leave the party, and the party is considered to be banned. लेकिन नाज़रीन PDM की गवर्नमेंट जो है, they themselves have been the witness to all of this evolution that I just talked about. Now that they are talking about banning PTI, I think they should know that banning parties by either political forces like Zulfikar Ali Bhutto banning NAP, or the military establishment like the Ziaul-Haq's regime banning Pakistan People's Party, none of them have failed. They should realize that there is only one particular institution, there is one particular force that could approve or reject political parties' popularity, and that is the people of Pakistan themselves. नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करते हैं. इसी वजह से कहा जाता है कि जो PDM की कोशिश है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है. लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट शुड आल्सो नो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट मिलिटरीली whenever the martial laws are imposed, they try to hit one or the another party, but none of those parties that military establishment targeted had ultimately vanished. They all resurfaced with the popular support ultimately. So PTI's case will not be different. Although we might see Imran Khan getting disqualified, that's a high probability to get him out of power. But does it mean the end of a party? I doubt. PTI might not be the PTI. It might be banned with the PTI name, but it might come with another name. जैसे NAP को बैन किया गया तो ANP बन गई. But the point of the matter is you can't just destroy political ideas by the stroke of pen or by your guns. Political forces have roots in people. And as long as people stand behind that ideology, they stand behind that idea, stand behind that leadership, that party, that idea is never likely to die. This is the lesson that world has learned, not just in democratic struggles, but also in global conflicts like the Cold War conflict. The capitalism had largely destroyed the Soviet Union, but had they destroyed the socialism, we doubt that. So ideas जो है नाज़रीन
चाहे वो हम सपोर्ट करें या अपोज करें. वी कैन हैव डिफरेंसेस विद द PTI आइडियाज़, बट वी शुड ऑल्सो एक्नॉलेज दैट अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान दे सपोर्ट दैट आइडिया, एंड दैट्स वाई PTI still stands at the largest popular party in Pakistan at this point of time. So if PDM or the military establishment really wants to make PTI irrelevant, so instead of banning the party, instead of creating defections in the party, they should try to support the pro-people policies. They have to make sure that people trust them again. But Nazeen, it is difficult for the masses to trust somebody that they have tried for decades and decades. Although PTI was also given 3 to 4 years of government, but PTI can have their own excuses for not delivering as per the expectations of the people. But can this be said by the PDM? The PDM narrative is that Pakistan's current challenges are because of Imran Khan's 4 years of government. But 75 years of history, you can't ignore that history. You can't ignore that Sharifs were in power directly or indirectly since 1980s. So कहीं ना कहीं पे नाज़रीन ये जो पॉपुलर विल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है if you really want to change public view about any political party. So to conclude नाज़रीन, हम कह सकते हैं that PTI is a reality, its narrative is a reality, its popular support is a reality. By creating defection within the PTI does not mean that PTI becomes irrelevant or its idea becomes irrelevant. PTI, as I said earlier, might not be PTI, it might come with some other name, but ultimately the powers be have to decide that do they really care about the popular opinion, do they really care that ultimately political parties or other institutions, they are only meant to serve the people of Pakistan, and if people of Pakistan support a political party or a political idea, everybody must respect that idea, and that is what is the spirit of Pakistan's constitution, and that is what Pakistan's founding fathers have desired for Pakistan. Thank you so much Nazeen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe to this channel. Allah Hafiz.